हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल सीरीज। अगर आप एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्लास। ऑल वी नीड इज अ पीस ऑफ व्हाइट कॉटन फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, एम्ब्रॉयडरी needle, scissor, pen, scale and embroidery hook. हमारी पहले स्टिच का नाम है बैक स्टिच। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से हम अपनी नीडल वापस नीचे लेंगे। पॉइंट 3 से हम अपना नीडल वापस लेंगे और उसे पीछे पॉइंट 2 में डालेंगे। सेम डिस्टेंस लेके हम सुई को निकालेंगे और उसे पीछे वापस उसी पॉइंट में डालेंगे। यहाँ पे हमें सारे स्टिचेस बैकवर्ड लेने हैं। बैक स्टिच एम्ब्रॉयडरी के आउटलाइन, लेटर्स और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। बैक स्टिच एम्ब्रॉयडरी का बेस है। अब हम स्केल की हेल्प से पूरी लाइन पर हाफ सेंटीमीटर का मार्क कर लेंगे। इससे बिगनर्स के लिए एम्ब्रॉयडरी करना इजी रहेगा और स्टिचेस भी इवनली स्पेस्ड और नीट रहेंगे। सेकेंड स्टिच है रनिंग स्टिच। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 और सेकेंड पॉइंट से हम अपनी नीडल को नीचे खींचेंगे। बस हमें सेम प्रोसेस पूरी लाइन पे कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ मार्किंग दी है सो दैट आपको इजीली समझ में आए।
ये स्टिच एम्ब्रॉयडरी की सबसे बेसिक एंड इजी स्टिच है। हमारा थर्ड स्टिच है फ्रंट स्टिच। ये भी बैक स्टिच की तरह ही है। तो नीडल को हम पॉइंट 1 से निकालेंगे एंड पॉइंट 2 में डालेंगे। अब पॉइंट 3 से निकालेंगे और पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में जो स्पेस है हम वहां से अपने नीडल को नीचे करेंगे। इस स्टेप को हमें बहुत ध्यान से देखना है। नीडल को हम हमारे पहले स्टिच के सेंटर में डालेंगे। नेक्स्ट स्टिच है चेन स्टिच। अब हम पॉइंट 1 से नीडल को निकालेंगे और उसे पॉइंट 1 में ही डालेंगे। मेक श्योर कि आप पूरा धागा ना खींचें। अब हम पॉइंट 2 से नीडल को निकालेंगे और अब उसे पॉइंट 2 में वापस डालेंगे।
अब नीडल को हम पॉइंट 3 से निकालेंगे और इसी तरीके से पूरी लाइन को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टिच है स्प्लिट स्टिच। पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में जो स्टिच है हम उसके बीच में नीडल को डालेंगे। पॉइंट 4 से नीडल को निकालेंगे एंड प्रीवियस स्टिच के बीच में नीडल को डालेंगे। एक स्मूथ स्टिच पाने के लिए मेक श्योर कि आप सेंटर से स्टिच को स्प्लिट कर रहे हैं।